of landforms. So landforms, what is this landform? Landforms are defined as the natural physical features found on the surface of the earth, created as a result of various forces of nature. Landforms जो भी physiographical features है, that is visible on the earth surface. earth के ऊपर जो भी physiographical features हम लोग देखता है, natural features, उसे हम बोलेगा landforms. Like mountains, plains, plateaus, hills, small जो भी ridges, whatever the features you are seeing on the surface of the earth, we will call it as landforms. So basically, we have divided this landform into different units. That is first order landforms, second order landforms, third order landforms. First order landforms comprising continental area and the oceanic area. So in the first order, we can divide the landform into continent and the ocean. So there is two branches, as we say. There is two branches. One is land area, another one is water, oceanic area. Coming next, that is second order landforms. So what are the landforms? Minor landform, but comparatively bigger landforms that comprising the continental area and at the same, on the other hand, the oceanic area. तो landforms में second order में continent में आएगा mountains, plains, plateaus, mainly these three. And on the other hand, in the second order on oceanic area में continental shelf region है, continental slope region है, then the ocean basin and the ocean deep. So deep ocean floor region, basin region, उसमें there also we can see mountain area, mountains है, oceanic mountains है, oceanic plain है, that is ocean deep areas, उसमें oceanic plains है, and the plateauic region, we will not say it purely as plateaus, but you can see almost the same feature that is in the continental area, the same in the oceanic area as well. And coming to the third order, we can see a lot of smaller landforms, like अभी जो हमारे इधर है, जो hills है, smaller hills है, जो flat plains है, alluvial pans, alluvial cones, अभी हमारा ये glacial area में जाने से है cirques, calls, ये सब इसके अंदर आ जाएगा थर्ड ऑर्डर में. जैसे वी शेप वाली आप लोग सुना होगा, तो कैनियंस, गॉर्जेस, ये सब चीज थर्ड ऑर्डर में आएगा. एट द सेम टाइम इन द ओशियनिक रीजन्स वी नो दैट आइलैंड्स, आइलैंड्स, कोरल रीफ्स, रिडजेस, मिड ओशियनिक रिडजेस, ये सब आएगा थर्ड ऑर्डर में. तो बेस्ड ऑन द साइज वी हैव डिवाइडेड द लैंडफॉर्म्स इनटू दिस मच ऑफ कैटेगरीज. सो व्हेन somebody asks which is the first order landform, you want to give only continents and oceans. Always we will confuse with when landforms पूछने से, when first order बोलने से, we will usually say mountains, plains and plateaus. Don't go directly for that. Actually, the first order landforms is considered as the continents and the oceanic regions. So in the statement you can see it is natural physical features found on the earth's surface which is created by various forces of the nature. So various forces क्या क्या है? That is very relevant. There is the for the formation of any landform, even the continent, oceans, or the subland, mountains, plateaus, जो भी हो, there is two kind of forces that is behind the formation of these physiographical features. One is endogenic forces and second one is exogenic forces. Endogenic and the exogenic. Endogenic means within the earth's interior से जो forces बाहर आता है उसे हम बोलेगा, हम लोग कॉल कर रहे हैं endogenic forces. And on the other side there is exogenic forces that exert in the external forces. earth के surface में जो
forces apply कर रहे हैं, that is exogenic forces. So mainly we want to group the landforms formation. As we are studying about the formation of landforms, we want to understand the exogenic forces and the endogenic forces. So as I said, there is endogenous forces and the exogenous forces. You have other term also, hypogene for endogenic and epigene for exogenous forces के लिए. तो ये दो term पे use कर सकता है, but usually we will say is endogenous force and the exogenous force. You should be familiarized with the other term also, hypogene and the epigene. ये term तो याद रखना है. And when comes to the endogenic forces, there is two type of forces based on the speed of action. जितना भी वो speed है, वो process करने का जो speed है, based on that we can divide the endogenic forces into two. One is catastrophic and another one is diastrophic. Catastrophic means sudden, happening within seconds or within short span, like volcanism, earthquakes, ये सब इतना है, जितना भी बहुत जल्दी ये तो happen होगा. That is catastrophic, sudden occurrence. Then the diastrophic, that is also divided into two. One is epirogenic forces and the second one is orogenic force. So दो type का है, epirogenic emergence and submergence. अभी एक continent पूरा एक landform ऊपर आ रहा है, नहीं ये तो पूरा एक landform नीचे जा रहा है. That you will study during plate tectonic का theory जब पढ़ता है उसी time we can discuss all these things, emergence and submergence. What is emergence, what is submergence, उसी time में we can see. And diastrophic में another category है orogenic forces. Oro itself, we know that is something related to mountain or like physiography. अब orographic rainfall आप सुना होगा, वो mountain में वो cloud आकर टकराता है, उसी टाइम उधर नीचे बारिश आता है, उसे orographic rainfall बोलता है. Like the same, orogenic forces is mainly in the formation of mountains, like faulting, folding, warping, ये सब इसके अंदर आएगा. This area we can discuss while we are studying the tectonic forces के जब उसके बारे में पढ़ता है उसी टाइम में. That is another topic we want to study, we want to cover in our syllabus. So today we can concentrate more on the exogenic forces or exogenous forces or process के बारे में. So exogenous forces में two type का forces है. One is degradation and the second one is aggradation. Degradation, degrading something, and aggradation is depositing something. So there is two kind of forces that is happening in exogenic forces. That is, one is degradational forces, second one is aggradation. So degradation means mainly erosion. एक चीज को weather और decompose करके उसको तो ले जाएगा, erode करके ले जाएगा. That is one kind of process happening in exogenous processes. And second one is deposition. वो जो erode करके आता है वो दूसरे एक जगह पे deposit करेगा तो एक दूसरा landform बन जाएगा. That is called depositional or aggradational process. So mainly two type of forces. One is actually degradational and other one is aggradational. Along with that, there are some more process that is resulting in the formation of or alteration of landforms. One is extraterrestrial processes, not happening that much. Like we say, the oceans or the deep gorges is happened because of the meteorite. तो इसमें गिरा है, धरती में गिरा है, इसलिए तो ये आया है. तो ऐसा कुछ चीज है that is extraterrestrial from the out के जो बाहर से आता है उसे extraterrestrial process बोलता है, but it is not relevant for us. And another one is anthropogenic forces or processes. That is human जो बनाता है, human ने construct करता है, वही anthropogenic process है. But for हमारे अभी as we are going with a competitive examination, these two areas is not relevant now. For the time being, it is not relevant. Here
मैक्सिमम क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स का वो इरोशनल लैंडफॉर्म्स होगा, ट्रांसपोर्टेशन लैंडफॉर्म्स होगा एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म, 3 तरह का लैंडफॉर्म्स होगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट एरिया। एंड आल्सो ऑन द अदर साइड, अब एंडोजेनेटिक फोर्स में, एंडोजेनियस फोर्स में ये सबमर्जेंस और एमर्जेंस, सबडक्शन, ऐसा बहुत कुछ चीज है that we will discuss later. Today we can go for these exogenetic forces. So exogenesis process, if you look, as I said, the geomorphic agent can 3 type of process है exogenous में. One is erosion, second one is transportation, and the third one is deposition. So based on this, there is 2 kind of landform formation. One is erosion landform, second one is deposition landform. जैसे there are different agents for doing this. अभी just like the working force, अभी एक बिल्डिंग हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो काम डिफरेंट काम करने के लिए हम लोग डिफरेंट वर्किंग फोर्स को लेगा। जैसे यहाँ भी सेम है, फॉर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनियस फोर्सेस क्या करेगा, कुछ एजेंट इरोड करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिपोजिट करने के लिए डिफरेंट एजेंट्स है, लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, ग्राउंड वाटर्स, ये सब चीज। सो दे आर द एजेंट। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे विल फर्स्ट इरोड ए हार्ड ऑब्जेक्ट, और हार्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को वो इरोड कर देगा, वो मटेरियल को उड़ा के ट्रांसपोर्ट करके किसी और जगह पे डिपोजिट कर देगा, वो डिपोजिट। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इरोशन, वन लैंडफॉर्म इज कन्वर्टिंग टू अनदर। तो ये लैंडफॉर्म कैसे हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द एंडोजेनिक, बाहर से वो अंदर से जो फोर्स है उसने, तो अभी माउंटेन्स, पोल माउंटेन है, 2 प्लेट्स कोलाइड करके एक तो बनाता है, दैट इज फोल्ड माउंटेन। ये सब वी विल डिस्कस ऑन, वो प्लेट टेक्टोनिक थियरी जब पढ़ाता है उसी टाइम में बोल देगा। तो ऐसे जो पहले बनता है वो लैंडफॉर्म को वी विल कन्वर्ट, दिस एक्सोजेनेटिक फोर्सेस विल कन्वर्ट इनटू डिफरेंट माइनर लैंडफॉर्म्स। इसके लिए इट यूज इरोशनल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी एंड डिपोजिशन एक्टिविटी exogenic force में। So these are the major process that is happening in exogenetic forces. So what is happening? See, landform process ऐसा है। First one is erosion. What is erosion? A dynamic process which involves the removal of geomaterial from the rocks and other deposited material. So it is a dynamic, ever moving, ever active process है। इसमें क्या करेगा, जो मटेरियल है अभी रॉक में, वो मिनरल्स, इसका कॉम्पोजिशन है, उसको तो वेदरिंग करेगा, उसको तो इरोड करके वो लेके आएगा, दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड इरोशन। एंड व्हाट इज द सेकंड वन, दैट इज डिपोजिशन, इज द लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय ये जो एजेंट्स है, एजेंट्स ऑफ इरोशन, वेदरिंग है, उन लोगों ने ये तो उड़ाकर, जहां after sometimes they will start depositing it, so that is called deposition. So these are the 2 important processes. अभी एक बारिश हुआ है, उधर से रेन वाटर आ रहा है, तो क्या करेगा, आते समय इट विल टेक द, यहाँ जो मिट्टी है वो मिट्टी को उड़ाएगा अपने नदी के साथ, पानी के साथ, इट विल टेक दिस हियर एंड इट विल फाइनली डिपोजिट एट सम अदर प्लेस में ये तो डिपोजिट करेगा। तो यहाँ जो इरोड करता है, उधर एक नया लैंडफॉर्म बनता है, और जहां पे डिपोजिट करता है उधर दूसरा लैंडफॉर्म बनेगा। तो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो एंडोजेनेटिक फोर्स और एंडोजेनेटिक फोर्स में कौन सी वाला लैंडफॉर्म्स होता है? फर्स्ट वन, रनिंग वाटर, वो हमारा स्ट्रीम्स, रिवर्स, ये सब एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ रनिंग वाटर है। अभी जो सरफेस रन ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप टू द फाइनल ड्रॉप टू द सी,
what water is moving. It shows a dynamic characteristic. So it shows it will run either through underground water or as surface or subsurface water. I say it will start running, moving. So उसी टाइम में it will erode and it will deposit. So ऐसे landform को we will usually call it as fluvial landforms. Remember the term fluvial, it is relating to running water. The second one is wind. Second agent of gradation is wind. So wind से जो activity होता है और landform होता है उसे बोलेगा Aeolian landforms. Aeolian landforms. Next one is glacier. तो glacial से जो landform होता है usually we will say it as glacial landforms. And in the coastal areas, the activity of waves, sea waves का activities होगा. तो जो landforms which is resulted due to the activity of waves, इसे हम बोलेगा coastal landforms. Coastal landforms is not purely made by the waves or these waves. It is also influenced by इसमें wind का भी activities होगा, running water का activity होगा. This also influence the coastal landforms. So mainly it is done by the waves. That is why it is called, the waves is relating to coastal landform. And the underground water, mainly that carbonation is happening at this region. So इसे हम बोलेगा karst topography or karst landforms is made by the underground water. जो limestone area है, mainly this karst topography is creating at those areas where the limestone ज्यादा है उसी region में this karst topography is mostly seen. So these are the major landforms which is created by the exogentic forces. Fluvial, that is relating to running water. Aeolian, which is related to wind action. Then the glacial is formed by the glacier action. And coastal landforms is mainly by the sea waves. And the karst topography is by underground water. So today we can discuss a major area, fluvial landforms. I will introduce you some of the major landforms. उसका एक टाइटल भी, हेडिंग भी बोल देगा. साथ में आई विल शो यू सम पिक्चर्स. सो ऐसा नहीं बोल पाएगा कि इस डेफिनेशन में ही आपको क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं बोल पाएगा. सो इफ यू रिमेंबर द शेप एंड if the question shows the same explanation, you can go for the answer. That's why I thought of giving you pictures more than giving different description. It is better to identify the object by seeing it. So when you see the question, you can identify what is that particular landform is. So landform either carved out due to the erosion or built up due to deposition by running water are called fluvial landforms. वो हम अभी बोला है. जो erosional process थे उसको तो remove, वो पहले वाला landform को carve, that is being created into new landforms. जो पहले वाला landform था उसे with the action of running water, that particular landform is converting to new landforms. और न्यू शेप में इसको तो लेके आएगा. नहीं तो वो लेके जाता है, वो इरोड करके जो पोर्शन को लेके जाता है उसे दूसरे जगह पे डिपोजिट कर देगा बाय रनिंग वाटर. देन वी विल से इट एज fluvial landform. Whether either it is in erosion process, either it is a depositional process, both time we will classify it as fluvial landform. The process which shape the fluvial landforms are called fluvial processes. Now we can see what are the major fluvial processes. So we know main process erosion है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिपोजिशन है फ्लूवियल प्रोसेस में. तो पहले होगा
इरोशन, कुछ जगह ऐसा होगा पानी होगा, वो पानी जब जाता है उसी टाइम इट विल इरोड दिस एरिया। तो पहले ऐसा वाला एरिया था, तो पानी इधर से जा रहा है, तो इट हैज स्टार्टेड इरोडिंग एंड इट हैज इरोडेड द एंटायर एरिया। So this is the process called erosion, removing a particular area. So ये कैसे करेगा? So there are different method of erosion processes. You have to remember these names. One is solution or corrosion. This is the first method. That is dissolution or solution or dissolving of the soluble material, especially the carbonate. जो पानी आता है, ये कार्बोनेट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसी पोर्शन से वो डिसॉल्व्ड मटेरियल को इसको तो लेके जाएगा. दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और इन अदर टर्म इट इज नेम्ड एज corrosion. Then the second type of erosion is abrasion or corrosion. Sorry, ये actually it is corrosion है, corrosion नहीं है, corrosion. corrasion. Okay, corrosion, not a corrosion. Corrosion is and solution is different. It is corrosion and abrasion. That is removal of material with the help of erosional tools. पहले वाला था पानी जब जाता है तो कुछ मटेरियल ऐसा है दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, तो वो सोल्यूबल होके जा रहे, वो सोल्यूबल करा के वो एरिया को लेके जाएगा. दैट इज सोल्यूशन और कोरोशन. सोल्यूबल दैट इज सोल्यूशन. अब्रेशन ऐसा है, अभी जब इरोड करते समय क्या क्या ये पानी ने वो सामने वाला मिट्टी नहीं तो छोटा छोटा पत्थर और कुछ वुडन पीसेस, ये सब चीज को लेके जाएगा. तो ये क्या करेगा, ये जो लेके जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इरोशनल टूल्स. ये जो पानी इस टूल्स को यूज करके दूसरे एरिया को इरोड करेगा. अभी मिट्टी को लेके जाएगा तो मिट्टी और जो लैंड्स आर वो ये मटेरियल है उसके बीच में फ्रिक्शन होगा, तो उधर से थोड़ा और ज्यादा पोर्शंस वो पानी को मिलेगा. वो जो सामने वाला वो साइड में जो भी चीजेस हो उसमें इरोड करके उधर से और ज्यादा मटेरियल को लेके जाएगा. दैट इज कॉल्ड अब्रेशन. एंड थर्ड वन इज attrition. That is mechanical tearing of erosion, tearing of erosional tools itself. अभी हम बोला ना उसके साथ वो जब जाता है तो erosional tools होगा, like I said, the sand होगा, soils होगा, pebbles होगा, cobbles होगा, छोटा छोटा पत्थर का पोर्शन है ना, वो सब लेके जाएगा. जब ये पत्थर और बाहर का एरिया, पत्थर ने बाहर एरिया को इरोड करके जाएगा, इसे अब्रेशन बोलेगा. और जो लेके जाता है दो पत्थर, वो पत्थर क्या होगा, वो अपना से बीच में अपने खुद से दूसरा पत्थर को टकराएगा, तो उधर से भी वो अगेन इट स्टार्ट फ्रैगमेंटेशन अगेन होगा. तो ऐसा प्रोसेस को दैट इज टीयरिंग बाय फ्रिक्शन, टीयरिंग ऑफ बाय फ्रिक्शन. दो ईच अदर ये तो करेगा, इसे बोलते हैं अट्रीशन. तो बीच में वो इरोशनल टूल खुद अपना से अपने बीच में जो फ्रिक्शन करके और टकरा के जो आउटपुट टीयरिंग होके वेदर करके जाएगा, उसे बोलेगा अट्रीशन. देन द हाइड्रोलिक एक्शन, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स ऑफ वैली थ्रू इम्पैक्ट ऑफ करंट्स. अभी वाटर नीचे जाएगा तो इसको तो अपना सा एक फोर्स है, खुद से एक फोर्स है. अभी ऊपर से अभी इफ यू लुक द अभी कभी भी वाटरफॉल में गया हो तो आपको देखा होगा जो नीचे वाला एरिया तो बहुत डीप होगा बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोलिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर. ऊपर से नीचे गिर रहे, तो उसी टाइम वो जो नीचे आता है वो फिजिकली ये with the physical power of this water itself, it will erode. That is called hydraulic action by the river currents itself. So there are 4 types of erosional processes. One is solution or corrosion, then abrasion or corrosion, then attrition, and the hydraulic action. So this is erosional process. So remember these names.
तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रिमूवल ऑफ मटेरियल विथ द हेल्प ऑफ इरोशनल टूल्स. तो you want the process through which material is removed with the help of erosional tools is called, तो abrasion और corrosion उसके नीचे होगा, abrasion और corrosion होगा. You want to answer this. तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा, मैकेनिकल टेयरिंग ऑफ इरोशनल टूल्स इन themselves पूछने से you will write attrition. इरोशनल एजेंट्स किसी बाहर चीज को इरोड करता है, इसे अब्रेशन बोलेगा. वो खुद से इरोड करेगा और खुद से टीयर करेगा, इसे हम लोग एट्रिशन बोलेगा. सो ऐसा क्वेश्चंस आने का चांसेस है. तो रिमेंबर ऑल दीज नेम्स. देन कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन ये तो थोड़ा हम अभी आप लोग देखने से यू कैन सी, अभी जो रिवर है हमारा दिक्रोंग रिवर यहाँ से जा रहे हैं, उसमें देखने से यू कैन सी लॉट ऑफ पेबल्स है, कोबल्स है, बड़ा बड़ा पत्थर्स है, छोटा पत्थर्स है. ये सब कहाँ से आएगा? जहां से इरोड करके ये तो ये रिवर ने उड़ा के आ रहे हैं. ये कैसे करेगा? सो फॉर दैट द रिवर यूज डिफरेंट मेथड्स. द फर्स्ट वन इज ट्रैक्शन. दिस इज एस्पेशली फॉर बिगर रॉक्स. बिगर रॉक्स को ऐसे उड़ा के नहीं आ पाएगा, तो क्या करेगा? वो स्लोप में थोड़ा ये पत्थर को धीरे धीरे लेकर स्लाइड करके, नहीं है तो उसको तो रोल करके धीरे धीरे बहुत स्लोली इट विल टेक दिस रिवर. अभी ये पत्थर को लेके आएगा, बड़ा बड़ा पत्थर को तो ऐसे ही ये तो लेके आएगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रैक्शन. बाय ट्रैक्टर सुना है ना, वो ऐसे पुल करके, नहीं तो रोल करके, नहीं तो पुश करके, स्लाइड करके इसको तो लेके आएगा विद दी hydraulic forces. The second one is saltation process. Saltation process is actually for और उतना बड़ा पीस को नहीं है, तो मीडियम साइज का, मीडियम से थोड़ा बड़ा साइज को रोल भी नहीं करने की जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो जम करके वो खुद से ये जब पानी आता है उसके साथ आएगा. दैट इज कॉल्ड साल्टेशन. धीरे धीरे जम करके ये नदी के जो कोर्स है उसी रास्ता से लेके आएगा. देन सस्पेंशन. सस्पेंशन मीन्स दैट इज फ्लोटिंग इन वाटर. पानी में सस्पेंड करके, फ्लोट करके, क्योंकि वो जो मटेरियल है उसका तो बहुत वेट कम है, उसका तो डेंसिटी हमारा पानी का डेंसिटी से थोड़ा कम होगा, तो उसको तो उड़ा के इसको तो ले सकता है. दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन. एंड फाइनली द सॉल्यूशन. जो हम इरोशन में भी बोला है सॉल्यूशन और कोरेशन. ये क्या है? जो डिसोल्व्ड पार्टिकल्स है उसको तो पानी में डिसोल्व करके वो लेके जाएगा. दैट इज इजी टू कैरी आल्सो. सो मैक्सिमम portion is taken as the form of solution and suspension. The remaining, the movements are very slow. Saltation and traction is very slow because the material will be much heavier. And finally, यह तो लेके आता है, इसे क्या करेगा? The running water will deposit. तो ये कैसे deposit करेगा? In the initial stages, when erosion is happening and the transportation is happening in the initial stage, that is river का youthful stage होगा. Maximum erosion happens in the youthful stage, mature stage and old stage. नदी के लिए 3 stages है. तो पहले होगा steep areas होगा, दूसरा होगा medium slope होगा, and finally it will reach to almost flatter area. तो ऐसा है. तो इस जगह पे जहां पे steep ज्यादा है, that is actually river's youthful stage है. So erosion is maximum happens at this area, and finally when it reaches at the bottom, it will start depositing this material. जो लेके आया है, erode करके आया है, उसको तो कहीं पे डिपोजिट करना है. तो क्या करेगा? यहाँ से एक पत्थर को लेके आया है, तो पत्थर यहाँ से नीचे जल्दी आएगा. यहाँ थोड़ा स्लो होगा क्योंकि स्लोप कम हो गया है, एंड फाइनली यहाँ आकर ये तो यहाँ तक आएगा. ये तो दैट इज हाउ इट ट्रांसपोर्ट. बट डिपोजिशन के लिए क्या चाहिए? देयर शुड बी डिक्रीज इन स्ट्रीम वेलोसिटी. फर्स्ट क्लॉज है.
तो स्ट्रीम वेलोसिटी कैसे कम होगा? तो इधर ये स्लोप है, वो तो स्टीप स्लोप से फ्लैट स्लोप और जेंटल स्लोप होनी चाहिए, देन द वेलोसिटी विल डिक्रीज। दूसरा है, कभी ऑब्जेक्ट बनाने से, अभी हम लोग डैम बना दिया बीच में, तो क्या होगा? द फ्लो विल बी रिटार्डेड हियर, यहाँ स्टॉप हो जाएगा, तो वेलोसिटी बहुत कम होगा रिवर का। तो ऐसा कुछ हिंड्रेंस होनी चाहिए ना, ये तो स्लोप कम होनी चाहिए। तो ये सब होने से रिवर डिपोजिट, इट विल स्टार्ट डिपोजिटिंग। अभी ना आप लोग डैम चेक करने से यू कैन सी लॉट ऑफ डिपोजिशन ऑन बोथ साइड में, ऐसा डिपोजिशन आपको देख सकते हैं। नहीं तो अभी जो भी रिवर हो उसके नीचे जाएगा तो फुट हिल्स में जाएगा तो यू कैन lot of deposition. And the second process is called increasing river load. जो लेके आता है अभी, increasing river load itself will reduce the velocity. बहुत ज्यादा सामान लेके अभी मेरा एक कैपेसिटी है, हम अभी 50 kg ले सकते हैं अच्छा से, लेकिन मेरा ऊपर वो लोग 100 kg दिया है, तो मेरा कैपेसिटी वेलोसिटी, मेरा स्पीड भी बहुत कम हो जाएगा, because I am carrying too much of load. ऐसे रिवर का भी सेम प्रॉब्लम है, if the river is carrying too much of load, उसको तो कहीं पे वो तो डिपोजिट करना ही होगा। So that these are the two conditions where the river will start depositing. One is reducing the stream velocity, another one is increasing the river load. So these are the major processes that result in fluvial landform formations. The process which initiate this fluvial is called fluvial processes. So we have three landform processes. One is erosion landforms, second one is transportation landforms, and the deposition. If you look, whatever the weathering agents, or whether it is a wind, whether it is a water, whether it is a glacial, whether it is a wave, you can see are these three processes, like erosion hoga, transportation hoga, deposition hoga. So by river, if you look, you can see all these processes. Erosion means solution, abrasion, attrition, and hydraulic action. Transportation means traction, saltation, suspension, and solution. And deposition means, because of this decrease in the stream velocity and increase in river load, the river will start depositing things, materials. So now we can discuss some of the important landforms that is created by the running water. So fluvial, this is called fluvial landforms. Landforms produced by running water. So this is erosion and this is deposition. तो इरोशनल लैंडफॉर्म्स में इतना सा नहीं है, बहुत ज्यादा होगा, बट यू कैन एक्सपेक्ट मोस्टली फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो इसी टाइम ये इसमें से ही एक तो पूछेगा। इरोशन में मेनली वाटरफॉल्स, प्लंज पूल्स, पोर्ट होल्स, रैपिड्स, कैनियंस, गॉर्जेस, वी शेप वैली। सो मेजर इरोशनल लैंडफॉर्म्स ये है। एंड मेजर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है delta, floodplains, estuaries, levees, meanders, alluvial fans, braided streams, oxbow lakes। तो ऐसा डिफरेंट, इसमें से कुछ ऐसा है प्योरली डिपोजिशनल फीचर्स है, कुछ तो ट्रांसपोर्ट करते समय भी देयर इज लैंडफॉर्म फॉर्मेशन देयर। सो रिमेंबर दिस, ऑल दिस you can expect question from this area. So let's go for it. So first one is V-shaped valley. The initial stages, the first stage, that is youthful stage. We know that when the slope reduces, this is mature stage, and in the bottom area to the sea, यहाँ से यहाँ तक, this is actually old stage. So V-shaped valley you can see mainly in
youthful stage. Usually V-shaped valley you can see in youthful stage है. So what is V-shaped valley? The valley formed in the youthful stage of fluvial cycle of erosion. ऐसा है जब I have shown you यहाँ से पहले पानी आएगा, पानी यहाँ डीप करके जाएगा, so it will form in the shape of a V. V ऐसा. Here also you can see V-shaped valley. So in the youthful stage, when the river shows or form in the form of V, or the valley is cut in the form of V, we will usually call this as V-shaped valley, because it's, if you look the shape, you can see it is V. So V-shaped valley, we can divide into two. One is gorge. V-shaped valley जब form आता है, इसके पहले we have two kind of formation. Just before the formation of V-shaped valley, we have two kind of slopes, or two kind of landform. One is gorge and another one is canyon. So what is gorge? It is very deep, narrow valleys having very steep side at the slopes. V-shaped valley ऐसा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. It's just like U or I. Actually, it is called I-shaped valley. If you look here, you can see the shape of I. So this is called gorge. So always we will confuse this gorge with canyons. So what is canyon? Extended form of gorge. gorge तो इसका तो लंबा उतना ज्यादा नहीं होगा जब it has been developed. ये gorge develop होके extended valley होगा for a long kilometers, that we will say it as canyons. So that is the different extended form of gorge. You can expect question like this: which is the extended form of gorge? So you can expect इसमें canyons होगा, V-shaped valley होगा, U-shaped valley होगा, ऐसा कुछ. So you want to write it as canyons. It comes just at the same, but if you look here, it is purely in the initial stage, this curve. But here you can see it is almost developed. ये तो पूरा develop हो गया है, and यहाँ you can see a small formation of V-shaped formation भी आपको यहाँ देख सकते हैं slope में, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं देख पाएगा, इसमें direct है. In canyon you can see a slope rising from यहाँ से यहाँ तक, ऐसा एक slope भी देख सकते हैं. ये तो parallel retreat बोल के लेके जाएगा, and finally it will form a V-shaped valley. So that is canyons. So remember the term V-shaped valley, then gorges. Gorges are deep and narrow valleys. When it get extended form, it will be, we will say it as canyons. Then the waterfalls, another one. A waterfall is a river or other water body steep far over a rocky ledge into a plunge pool. Plunge pool हम बोल देगा, ऐसा होगा, there will be continuous rock, but यहाँ तक ये rock तो hard rock होगा, and remaining portions you can see soft rock. यहाँ soft rock होगा, तो पानी यहाँ से आएगा and it will start eroding this soft rock. इसको तो erode करेगा, and finally what happens? ये हार्ड रॉक रिमेन करेगा और पूरा सॉफ्ट रॉक को इरोड करके ये तो नीचे जाएगा. तो water will come here and there it will be sudden fall of water because all the soft rock has been eroded. तो पानी के रास्ते से जो सॉफ्ट रॉक पूरा इरोड करके गया है, so that is called waterfall. तो waterfall कल्चर हो गया because of the erosion of soft rock and the hard rock remained. तो ये होगा, ये सब सॉफ्ट रॉक होगा, तो कंटिन्यूस ऐसा पूरा होगा. यहाँ इतना तक हार्ड रॉक था, तो ये पूरा इरोड करके ये पूरा एरिया को इरोड करके गया है. सो वाटर स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, दैट इज वाटरफॉल्स. अभी आपको एक और टर्म सुना होगा, कास्केड्स. कास्केड, CASCAD.
This is also a waterfall, but initial stage of waterfall. यहाँ देखो पानी यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ रहा है, बट इन कास्केड्स तो ऐसा होगा, पानी यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से धीरे से एक तो हार्ड रॉक ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, तो पानी डायरेक्ट नहीं नीचे ऐसे नीचे नहीं आएगा. इट विल फॉल हियर फर्स्ट, देन हियर, देन हियर. तो ऐसे रुके रुके पानी नीचे आएगा, इसे हम लोग कॉल करेगा कास्केड्स. If it is continuously directly falling from top to bottom without too much of interference from the middle area, we will call it as waterfall. And इसके बीच में if the water is falling step by step, then we will say it as cascades. That is बहुत दोनों एक्चुअली में वाटरफॉल है, देखने में वाटरफॉल जैसा ही होगा कास्केड्स भी, बट कास्केड्स ऐसा नहीं है. यहाँ आने से यहाँ भी गिरेगा, इसके बाद यहाँ और ज्यादा ऐसा पत्थर होगा, तो वो पत्थर में गिर के नीचे आएगा. वाटरफॉल ऐसा नहीं है, डायरेक्ट नीचे गिरेगा. Remember that these two names also, waterfalls and cascades. Then the plunge pools. A plunge pool or plunge basin or waterfall lake is a depression in a stream bed at the base of waterfall or shutting. तो ऐसा है, पानी नीचे आएगा, तो यहाँ हम बोल दिया है इरोशन बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक फोर्स. ये जो नीचे का वो एरिया है, असली में ये ऐसा था, इसको तो ये पूरा इरोड करके यहाँ एक तो पूल जैसा बना देगा. These pools we will say it as plunge pools. ऐसे देखो, यहाँ से पानी आ रहा है, तो यहाँ असली पत्थर था, ये पत्थर को पूरा इरोड कर दिया है, एंड देयर इज ए डिप्रेशन. यहाँ एक तो डिप्रेशन बन गया है, इसे बोलेगा प्लंज पूल्स. तो अभी जो भी क्वेश्चन हो वो वाटरफॉल रिलेटेड, द पूल्स क्रिएटेड बाय वाटरफॉल, देन यू कैन से इट एज प्लंज पूल्स. वो ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा. देन रैपिड्स. तो रैपिड्स, कास्केड्स, वाटरफॉल तीनों ऐसा है, एक लेयर होगा सडन, उसका तो स्लोप सडन होगा, उधर से नीचे जाएगा. लेकिन वाटरफॉल ऐसा है डायरेक्ट नीचे. कास्केड तो ऐसा है स्लोप स्टीप होगा, लेकिन छोटा सा ऐसा स्टेप्स होगा, तो ये इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा. So that is cascades. And rapids are areas of shallow, fast flowing water. तो इसमें ऐसा है, स्टेप ऐसा होगा, फिर ऐसे आकर ऐसा होगा. उतना स्टीप नहीं है, ऐसा कास्केड्स और रिवर फॉल जैसा, वाटरफॉल जैसा नहीं होगा स्टीपनेस. यहाँ पानी यहाँ जल्दी आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, जैसे यहाँ एक फर्स्ट लेयर इधर है, सेकंड लेयर इधर है, तो पहले इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर नीचे जाएगा और ऐसे जाएगा. तो ऐसा ऊपर से एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा. दिस आर rapid means fast moving. Rapid are areas of shallow, fast flowing water in streams. So just like waterfalls, you can attach these two statements words also. One is cascades and another one is rapid. सब ऐसा है, ऊपर से नीचे जल्दी जाएगा, but waterfall direct, cascade step by step, but the steepness is high. And for rapid steepness, it is also step by step, but the steepness is comparatively low. Shallow होगा इसका depth. Then potholes. A circular or cylindrical hole in a riverbed which is produced by the force of water and the abrasion. Abrasion हम बोला है जो river अपना इरोडिंग टूल से इरोड करता है, उसे abrasion बोलेगा. तो ऐसे क्या होगा, यहाँ से पानी आएगा, कुछ जगहों पे सॉफ्ट रॉक होगा, वो सॉफ्ट रॉक को ये तो स्टार्ट इरोडिंग, वो इरोड करके वो पूरा एरिया को इरोड करके नीचे तक जाएगा.
तो उधर ऐसा ऐसा स्मॉल होल्स हो जाएगा। पोट, ऐसा पोट है ना, वो पोट जैसा ऐसा पोट है, तो पोट जैसा होल्स बना देगा अपने रास्ते पे। दैट इज कॉल्ड पोट होल्स। पोट होल्स बोले थे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक एक्शन और अब्रेशन द सॉफ्ट रॉक विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉफ्ट रॉक, नहीं है तो softer part of the rock is removed. That is called potholes. So these are the major terms you want to remember regarding erosional feature of अभी नदी का जो erosional feature है, इसमें से you want to remember all these. These are the landforms created. अभी दूसरा एक और है सिनोसिटी, एक और नाम है सिनोसिटी। ओके, तो हम इसमें नहीं दिया है। सिनोसिटी ऐसा है, अभी आप लोग देखा होगा जब रिवर नीचे आ रहा है तो ये तो ऐसा ऐसा फ्लो करेगा। यूजुअली वी विल से इट एज मियांडरिंग, रिवर का मियांडरिंग। यूजुअली मियांडरिंग हैपेंस इन द लोअर ओल्ड स्टेज में, नहीं ये तो मैक्सिमम इसका तो बीच में होगा, लेकिन बीच में मीन्स मेच्योर स्टेज में होगा, नहीं है तो मैक्सिमम इट विल कम्स ऑन ओल्ड स्टेज में होगा, बिकॉज रिवर डोंट हैव द फोर्स। बट इन द इनिशियल स्टेज, यूथफुल स्टेज में, नहीं है तो मेच्योर स्टेज, इनिशियल मेच्योर स्टेज में द रिवर ऐसा मूव करेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिनोसिटी। ये सिनोसिटी क्यों है? क्योंकि अभी देखो इधर थोड़ा ये तो हार्ड रॉक इधर तक आया है, तो क्या करेगा, रिवर विल फोर्स टू मूव लाइक दिस, एस शेप में। तो इधर भी पत्थर आगे आया है, तो इधर से रिवर टू मूव लाइक यस जैसा, इसको तो मूव करना पड़ेगा। दिस इज नॉट बिकॉज रिवर के लिए पावर नहीं है, ऐसा नहीं है असली में, बिकॉज ऑफ द हार्ड रॉक दैट इज कमिंग, द रिवर विल फोर्स टू बेंड, river will force to bend because of the hard rock. So this will happen in the initial state of a river. So that is called sinuosity. We meandering in the initial stage, we have to say it as sinuosity. And in the lower stage, it is sinuosity. In the lower stage, it is, we will say it as meandering. So remember all these names: V-shaped valley, gorge, canyons, waterfalls, cascades, rapids, plunge pools, potholes, and sinuosity. So these are the major erosional features. Now coming to the transportation and depositional feature, we can distinguish between these two, meandering ho, jo bhi ho, it comes deposition and transportation together. उसके साथ थोड़ा सा erosion भी आ रहा है, so we can't say it purely as depositional feature. So we can add the transportation and depositional feature both, we can say. So first one is meandering. Just I said, this movement, S-shaped movement in the lower course of river. River का जो lower course है, that is called the bend of longitudinal course. तो longitudinal course ऐसा है river का सबसे ऊपर पोर्शन से नीचे तक, दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल कोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल कोर्स है। उसी टाइम में रिवर बेंड होगा, बिकॉज इसका तो पावर बहुत कम है इन द प्लेन एरिया, रिवर का वेलोसिटी कम होगा, सो जहां पे उसको रास्ता मिलता है उसी रास्ते से द रिवर वांट टू फ्लो, सो ऐसा बेंड करेगा। इसका इरोशनल पावर बहुत कम है, so this is called meandering process. Then the oxbow leg is the result of meandering. अभी continuous meandering होने से it will create oxbow leg. A lake formed as a result of river finds a different shorter course during its meandering. ये तो कैसे है? अभी देखो रिवर ऐसा meander करके जा रहे हैं, तो you can see the river flows here and river flows here. तो यहाँ इरोशन भी हो रहा है ये दोनों जगह पे,
तो फाइनली क्या होगा, रिवर विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस, यहाँ से डायरेक्ट. तो देयर इज अ पोर्शन विच रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्स बो. ऐसे ऐसे बो, एक तो रिमेनिंग लैंड, यहाँ एक तो पानी का, एक तो लेक बन जाएगा लाइक दिस. भी ऐसा हो रहा है. तो ये नेक एरिया इरोड करके जाएगा. तो ये जो एरिया है वो बाकी हो जाएगा लाइक दिस. ऑक्सबो लेक. देखो इधर, river will find its shorter waves area flow, and it will move and keep remain. I say, okay, that is Oxbow Lake. Then braided streams, a stream consisting of multiple small shallow channels. ये स्टेटमेंट तो याद रखना है, स्मॉल शैलो, multiple small shallow channels that divide and recombine numerous times forming pattern resembling the strands of a braid. ऐसा है ना. अभी ऐसा, this is the braid shape, ऐसा है. तो रिवर भी when it moves, ये क्या करेगा, चैनल भी ऐसा डिवाइड स्प्लिट होगा, फिर रिकॉम्बिनेशन होगा, फिर स्प्लिट होगा. तो इसके बीच में यू कैन सी लैंड हियर, लैंड. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड, ऐसा आइलैंड्स तो बन सकता है, या तो ऐसे जाएगा, फिर यहाँ मीट होगा, एक तो पोर्शन इधर से आ रहा है, दैट विल मीट अगेन, तो रिकम्बाइन होगा, यहाँ से डिवाइड होकर दो जगह ऐसे सिंगल आया था, एक तो डिवाइड होकर इधर गया था, इधर गया था, फिर आकर यहाँ फिर मीट होगा रहा. तो ऐसा स्प्लिट करके वापस रिकॉम्बिनेशन रिकम्बाइन करेगा, इसे बोलेगा braided stream because it's the shape of a braid. Then floodplains. A floodplain is an area of land that is prone to flood always. So there is some, अभी we can't say this is, अभी रिवर का कैचमेंट देखने से we can't say अभी पानी ज्यादा हो गया नहीं, ये तो रास्ते पे कुछ ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा, जो पानी अपना चैनल से आ रहा था वो सामने वाला लो लैंड में वो जाएगा. तो दैट होल एरिया, दैट होल लो लैंड वेयर द वाटर विल रीच, दैट एरिया वी विल से फ्लड प्लेन्स. द प्लेन्स विच इज क्रिएटेड बाय फ्लड ऑफ ए रिवर. The flood, the area, the plain which is being created because of the flood of a river is called the flood plains. अभी रिवर ऐसा जा रहा है, तो इसका तो यहाँ कुछ ब्लॉक हो गया नहीं, ये तो बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो इट विल स्टार्ट फ्लोइंग टू ऑल दीज एरियाज. इट विल स्टार्ट फ्लोइंग टू ऑल दीज एरिया टिल देयर विल बी ए हाई एलिवेटेड एरिया होनी चाहिए, उधर तक ये तो पानी पूरा आएगा. तो इस एरिया को we will say it as flood plains. Then next one is levees. A levee is a narrow belt of ridge. रिवर के दोनों साइड में if you look, ऐसा रिवर चैनल तो ऐसा होगा, तो इधर से ऐसा होगा अपना लैंड. एक्चुअली ये जो रिड्ज, कंटिन्यूस रिड्ज है बिटवीन दोनों साइड में पानी का, जो नदी का दोनों साइड में ये दोनों रिड्ज आता है, जैसे ये, दिस इज कॉल्ड लेवीज. इसे बोलता है लेवीज. ए नेचुरल और आर्टिफिशियल दैट कैन बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एज वेल, दैट ब्लॉक ऑफ blocks water from going where we don't want. हमको जहां पानी को एक तो रास्ता अपना से दिया है, वो रास्ते से जाने के लिए देयर विल बी सम एलिवेटेड ब्रिजेस होगा नदी के सामने, ये दोनों साइड पे, दैट ये दोनों साइड पे यू कैन सी हियर, इसे वी विल से इट एज लेवीज. स्मॉल एलिवेटेड पोर्शन है लाइक ए ब्रिज on either side of the
river is called levees. And at the same time, you can see another term also, that is terrace. Just like step farming आप पढ़ा होगा, तो step ओके यहाँ फार्म कर रहे हैं, जैसे नदी भी अपना सा एक तो स्टेप जैसा फॉर्मेशन बना देगा because of the actions of river. We can see ऐसा step by step. These are called terrace. 1 step, 2 step, 3 step, ऐसा step बना देगा. When the river flood, sediment deposits in the sheet across the floodplain and built over time. This type of step-like formation, step-by-step formation. This is the result of river flooding. ऐसा वाला landform बन जाएगा. This is called terraces. So whatever the term I am saying, you want to remember it. Then in the river mouth area, you can see estuaries, alluvial ponds. Alluvial ponds also seen in the foothill areas as well, and the delta. This is purely depositional features. Estuary is not purely depositional, but these are all seen. You can see in the mouth of the river. You can see, and estuary is an area where freshwater river or stream meets a ocean or sea. ये sea होगा ये जो area, and यहाँ हमारा river आएगा. So this is, we will say it as the mouth of the river बोलता है ना, उसी region को we will say it as estuaries. This area where the river meets sea or ocean, that is called estuaries. Then alluvial fans ऐसा है, these are hills and this is the bottom. हिल का foot hills बोलेगा तो foot of the hills, इसके सबसे नीचे. तो यहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है, तो यहाँ आकर जल्दी ये तो फ्लैट होगा, इसका रिलीफ तो फ्लैट होगा. जैसे ऐसे एक तो हिल था, जल्दी इधर आकर फ्लैट होगा, तो क्या होगा, जो सेडिमेंट्स ये पानी लेके आता है तो इधर आके इसका तो इधर डिपॉजिट करेगा. सो इट विल हैव द शेप ऑफ ए फैन. इधर पूरा रोटेट करके ऐसा होगा, नहीं है तो इट विल हैव ए ऐसा कॉर्न जैसा होगा. सो बोथ alluvial fans and corns of the same formation. ज्यादा होने से it will form fans और कम होने से it will form corns. ऐसा है, ऊपर से नीचे ये डिपॉजिट करेगा. Where there is abrupt drop in the gradient of the channel, especially at the base of foothills, materials accumulate to form alluvial fans and corns. तो क्या है, जहां पे नदी का ग्रेडियंट कम होगा, especially the base of foothills. We have delta also having in the same form में delta भी आएगा, लेकिन delta usually वो नदी से जब पानी प्लेन एरिया स्पेशली इन द सी के कोस्ट में आता है, सी के सामने कोस्टल एरिया में आता है, उधर ये ऐसा वाला फैंस और कॉर्न बनाता है, उसे हम डेल्टा बोलेगा. बट व्हेन इट इज इन द इंटीरियर एरिया, स्पेशली इन द फुट हिल्स एरियाज वेयर द ग्रेडियंट्स become almost level, then there the river will deposit. That is called alluvial fans. And finally delta, deposit will almost triangular shape at the mouth of the river. River का mouth जहाँ पे, yeah, this will be sea or a big lake होगा, bigger lake होगा, ना ये तो sea होगा, ना ये तो ocean होगा. उधर जब ऐसा triangular, delta means this is actually delta ना, तो ऐसे shape में बनाने से you will say it as deltas. So these are the major deposition features of the rivers. So today we can study about this fluvial process.